class. I am back, and myself Chandrika Ratnavas. As you all know, we are continued our first chapter. Now we are on second chapter. So we are going to start our second chapter. Name Roman numerals. I have already uploaded 2 videos on introduction of Roman numerals, in which you have know about how to solve them. We are currently going to do exercise. Okay, so we start. Okay, mental math. This thing you found on your page number 9, right? Let me check again. You think this thing? Yes, you found this thing on your book, chapter number 9. Page number 9 here. Okay, we are going to start with question number 1. What number is this? X, X, V, I. So I am here to provide you a video by which you have understood the things. But before doing this, you have noticed that you have to sure that you have already watched previous videos, because these are the important things by which you can learn the things. Okay na? It doesn't mean कि आपने exercise कर ली आपका questions हो गए. You have to watch all these previous videos, the both 2 videos, because according to them you can solve that, right? Or nextly I am showing you how to solve this. Okay, so we are going to start our first question of mental math. Okay, X, 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 V, I. Okay, so first of all we just clear it out again. X is equals to 10, V represent 5 and I represent 1. Okay, so X, X, X. So how? 10 plus 10 plus 10 plus 5 plus 1 plus 1 plus 1. 10 plus 10, 20. 20 plus 10, 30. 30 plus 10, 35. 35 plus 1, 36. 36 plus 1, 37. 37 plus 1, 38. Okay? Is that clear? और यू नो दैट इफ यू अगर आपको लर्न नहीं होता ना डायरेक्ट कि जो मैंने आपको टेबल शो की थी ना प्रीवियस वीडियो में, अगर आपको उस टेबल से लर्न नहीं होता है कि ये जो वैल्यू है ये 30 है, राइट, और वो टोटल 50 तक की वैल्यूज थी, अगर आपको पूरी वैल्यू लर्न हो जाती है तो इजी फॉर यू. इफ लर्न नहीं होती है तो कोई बात नहीं, वी हैव दिस मेथड, राइट. जैसे हमने लर्न किया था C इक्वल्स टू 100, L इज इक्वल्स टू 50, और अभी 2 और वैल्यू होंगी, वो अभी अब हमारे कोर्स में इतनी नहीं आ रही, तो आई एम नॉट टेलिंग यू दैट नाउ, राइट नाउ. सो द आंसर इज 38. X, 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 10 plus 10 plus 10, 30. 5 प्लस, अगर ये 1 आगे आ जाता है तो माइनस होता है, पीछे आता है तो प्लस होता है. गॉट इट? Move on to question number 2. What number is this? XLVII. So there are 2 options. A is 89 and B is 47. Let me show you what is the correct answer and how to you know how you in exams you have to realize that which answer is correct, कि कौन सा आंसर जो है वो correct होगा. Okay. So now we go on question number 2. XLVII. Okay, so X represent 10. When I already told you, जब भी L जो बड़ी वैल्यू है उसके आगे छोटी वैल्यू होती है, यानी when शॉर्टर वैल्यू लार्जर वैल्यू से आगे होती है, यानी पहले होती है, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसमें हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, राइट. अगर कोई वैल्यू छोटी वैल्यू इस साइड में होती है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं. ओके, सो L से पहले 10 हो रहा है, तो व्हाट वी हैव टू डू, L रिप्रेजेंट 50 माइनस 10, राइट, प्लस, क्योंकि ये क्या आगे है 5, V रिप्रेजेंट 5, 1 I रिप्रेजेंट 1. ओके, प्लस 1 प्लस 1. गॉट इट? 50 माइनस 10, 40. 40 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1, राइट. तो व्हाट्स द आंसर शुड बी
40 plus 5, 45, 46, 47. The answer is 47. Got it? If you have any problem, you have according to the table, if you learn the table, you directly know the answer. But if you don't remember the table, the basic thing which you have to learn are these. And in previous 2 videos I have shown कि कैसे हम प्लस करते हैं, कब हम माइनस करते हैं, तो वो आपको क्लियर और हो जाएगा. आप उसको रिवाइजिंगली देखते रहिए, समझते रहिए. Got it? So move on to question number 3. What number is this XCI? So you know, first you know about these things कि what represent the X, what represent the C and what represent the I. Okay ना? तो you know all these things previously also. Let me remind you again, okay, in this video, and you find the answer of this question too. Okay. Okay, now we go on question number 3. XCI. Okay, so X represent the 10, C represent the 100, I represent the 1. Okay, X किसको represent करता है 10 को, C represent करता है 100 को और I represent करता है 1 को. तो basically we know that when a shorter value comes before the larger value, which means we have to minus that. हमें ये पता है कि जब कोई छोटी डिजिट, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू से पहले साइड में आती है, पहली साइड में राइट और लेफ्ट साइड में लिखी जाती है, तो व्हाट वी हैव टू डू, बिफोर की जाती है तो वो क्या होगी, माइनस. एंड इफ अ शॉर्टर वैल्यू कम्स आफ्टर द लार्जर वैल्यू देन इट हैज टू बी प्लस. सो व्हाट वी हैव टू डू, 100 माइनस व्हाट इज दिस, क्योंकि पहले तो हम क्या करेंगे 10 को माइनस करेंगे, राइट. देन ये आ गया तो क्या करेंगे, प्लस 1. तो फर्स्ट वी हैव टू डू 100 माइनस 10, 90. 90 प्लस 1, इट्स क्लियर टू यू. ओके, हम आप पहले 11 नहीं करेंगे, इसको पहले 11 करके फिर इसमें से माइनस कर देंगे. दैट्स द रॉन्ग थिंग. आप ये नहीं कर सकते, राइट. आपको करना है पहले इस डिजिट को माइनस करना है, क्योंकि इससे पहले तो पहले इसको माइनस करना है. पहले आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है, फिर आपको इन दोनों को ऐड करना है. आप पहले से जैसे इधर तो मैंने लिख दिया, पर आप इसको इन दोनों को पहले प्लस नहीं कर सकते, राइट. आपको क्या करना है, पहले इनमें से इसको माइनस करना है, फिर इस प्लस करना है. ओके, नहीं तो आपका आंसर फिर गलत आ जाएगा, 89 आ जाएगा. 89 इज द रॉन्ग आंसर. गॉट इट. Moving forward to question number 4. What number is this XLII? Okay, तो ये कौन सा नंबर है XLII? तो you have to find out कि 42 is the correct answer or 92 is the correct answer. So basically what you have to do, you have to do on question number 4 of mental math. XLII. X represent the 10, L represent 50, I represent 1 and I represent the 1. So X before the L. So it means 40, right? L represent 50, X represent 10. So if because it's a higher value से पहले shorter value आ रही है, छोटी वैल्यू के बड़ी वैल्यू से पहले छोटी वैल्यू आ रही है, तो माइनस होगा. तो क्या करेंगे हम, L माइनस X, that is 50 minus 10, that is 40, right. 40 अब L में क्या दोनों प्लस हो रहे हैं, तो what we have to do, हमारा ये हो गया. पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया, अब हमें इनको प्लस करना है. प्लस I is equals to 1, I is equals to 1. तो आंसर इज 42. अगर आप टेबल लर्न कर लेंगे तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन वही है, बिकॉज यू हैव टू, इफ यू लर्न द टेबल ना, यू हैव डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चन. इफ इट्स हार्ड टू यू, you have to remember all these 7 things, or especially the notes one which I have told you in this chapter's video, in intro videos. Okay, so we are on question number 5. What number is this LXXI? Okay, so this these in the Roman number form. You have to find the number in Indo-Arabic numeral. Okay, so you have to solve it. If you remember the things which are in tables, it's easy to you to just pick on the options. But if you don't remember the things, because it's very hard to remember the whole table, so you have just represent the things and you can understand, because maths doesn't mean learning, maths means the understanding, right. Math means the understanding. Okay, so let me show you how you will solve this one. Student, we are going to question number 5.
L represent the 50. X is now after the L, तो it has to be plus. ये क्या होगा? प्लस होगा. अगर पहले होता तो हो जाता है माइनस, पर ये इसके बाद है, बड़ी जिसके बाद छोटी वैल्यू है तो क्या हो जाएगी? प्लस. 10 रिप्रेजेंट दी, सॉरी x रिप्रेजेंट दी 10. x किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 को. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. 50 प्लस 10, सॉरी 50 plus 10, 60, 60 plus 10, 70, 70 plus 1, 71, right? It's clear to you all? L represent 50, X represent 10, X represent 10, 1, I represent 1. We have to add them all, right? The answer is 71. Got it? Moving to question number 6. What number is this? XCII. A option is 92, B option is 258, C option is 32. You have to find out which option is correct. Okay, so let me show you how you solve this one, right? Okay, students, we are on question number 6 of mental math, page number 10. Page number 10. Okay, so X represent the 10 and C represent the 100. तो बिकॉज इट्स वैल्यू कम बिफोर द लार्जर वैल्यू, जो छोटी वैल्यू है जो x है वो 100 से कम है, तो ये क्या होगी? माइनस होगी. क्यों? अगर ये यहाँ होती तो प्लस हो जाती, पर ये पीछे है, मतलब x इससे पहले है, तो ये माइनस होगी. व्हाट वी हैव टू डू? 100 माइनस 10. आंसर शुड बी 90, राइट? वी हैव टू राइट देयर 90, राइट? दिस इज अ रफ वर्क. ओके, देन प्लस 1 बिकॉज दीज आर आफ्टर दी आफ्टर दी 100, जो छोटी वैल्यू है जो 100 के बाद है, सो ये क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएंगे. आंसर इज 92. C represent the 100 and every time remember C represent the 100. If you don't remember these important things, then you can't solve the question. C represent the 100, X represent the 10, I represent the 1 and I represent the 1. And when the value comes before the larger value, when the shorter value, छोटी value larger value से पहले आती है, before आती है, तो we have to minus that. If the shorter value comes after the larger value, then we have to plus it that. Okay, it's clear to you? Okay, so basically we are going to do question number 7. What number is this? XCII. This is similar to question number 6, in which the question is XCII. So you just have to plus 1 in this, and let me explain you again how do you do this question, right? Question number 7. Okay, so students, we are on question number 7 of mental math, page number 10. Okay, now we have to do this question. Okay, the X represent the 10, C represent the 100. So first we have to solve this one because जो बड़ी वैल्यू से पहले छोटी वैल्यू आ रही है, तो 100 same as we have done in question number 6. ये रफ वर्क है. ओके, डोंट नोटिस दैट. 90, I represent the 1 because it's the shorter value comes after the larger value. जब छोटी वैल्यू larger value के बाद आती है तो it has to be plus, right? और पहले आती है तो it has to be minus. Plus 1 plus 1 plus 1. 90 plus 91, 90 plus 1, 91, 91 plus 1, 92, 92 plus 1, 93. So answer is 93. Always remember these concepts. Okay, the 7 things you have to remember. What? 1 X, I represent the 1, B represent the 5, X represent the 10, L represent the 50, C represent the 100, D represent the 500 and M represent the 1000. Okay, the 500 and 1000 not in our course right now, so we are not discussing on that currently, but you have to remember that also, right? Because it's important to, if I ask you in exams ki what represent the D, then you have to write this, and if I ask you in exams what represent this, then you have to write M. Okay, so we don't have question about them, but we have to focus on these values, right? Moving to the last question of mental math of chapter 2 Roman numerals, 8 question. What
number is this LV. Okay, so let me show you how to solve this question. Okay, so we are on question number 8 of mental math, page number 10, and this is our last question of mental math, okay, of this chapter, set number 2. L represent the 50 and V represent the 5. So this value is larger than this, so we have to plus it. Okay, now these are the notes which I have told you in intros videos, so you have know about that. कि जब भी कोई छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू के बाद आती है तो क्या होती है प्लस. तो 50 plus 5 55. Okay, got it? I think all the things are clear to you. If you have any doubt, let me know. I hope you have understood all the questions, all the mental math question of chapter 2 1 to 8. If you have any doubt in these questions, let me know. अगर आपको कोई भी problems हो रही हैं इन questions में, please मुझे बताइए. Till then, we are going to start our next exercise of this chapter in next video. Until then, stay safe, stay home, practice regularly, because if you don't practice the mathematics, you just forgot all the things. Okay na? Every time when you practice the things regulars, it makes you perfect. Okay, so I hope you all practice it regularly.